हरे कृष्णा। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते निर्विशेषा शून्यवादी आश्रमे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। Let's open the verse. So, can somebody tell me what we are discussing? Tell which verse? Somebody should tell me. So 4.8.37. We covered till 4.8. Okay. 4837. Okay. पदम त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषो साधुवर्त्ममे ब्रूहि स्मात् पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरपि अनादिशितं. Bro, my voice is loud enough. I'll speak this much. Is that okay? Or I need to increase my volume? Just let me know. This is okay, Prabhu. Okay, fine. Okay. So, Padam, position, Tribhuvana, the three worlds. Utkrishtam, the best. Jigisho, desirous. Sadhu, honest. Vartma, way. May unto me, Bruhi, please tell. Asmat, our, Pitabhi, by the forefathers, the father and grandfather. Brahman, O great Brahmana. Anyai, by others. Api, even. Anadhishtitam, not required. Can you see one? Down. From down you can get down. More down. Yeah. Up. Yeah, this one. Thank you. O learned Bhavana, I want to occupy a position more exalted than any yet achieved in the three worlds by anyone, even by my fathers and grandfathers. If you will oblige, kindly advise me an honest path to follow by which I can achieve the goal of my life. Purport. When Dhruv Maharaj refused to accept the Brahminical instruction of Narad Muni, okay, I'll share this also. Wait a minute. Yeah. When Dhruv Maharaj refused to accept the Brahminical instruction of Narad Muni, naturally the next question would be what sort of instruction he wanted. So even before Narada Muni asked, Dhruv Maharaj expressed his heartfelt desire. His father, of course, was the emperor of the entire world. His grandfather, Lord Brahma, was the creator of the universe. Dhruv Maharaj expressed his desire to possess a kingdom better than those of his father and grandfather. He frankly stated that he wanted a kingdom which had no competitor within the three worlds, namely the higher, middle, and lower planetary systems. The greatest personality within this universe is Lord Brahma, and Dhruv Maharaj wanted a position even higher, even higher than this. He wanted to take advantage of Narada Muni's presence because he knew very well that if Narada Muni, the greatest devotee of Lord Krishna, could bless him or show him the path, then certainly he would be able to occupy a more exalted position than any position within the three worlds. So he wanted help from Naradji to acquire that position. I think we had done this. Does he wanted help or not? No? Okay. Dhruv Maharaj wanted position greater than Brahma. This was practically an impossible proposition. But by pleasing the Supreme Personality Godhead, a devotee can achieve even the impossible. One particular point mentioned here is that Dhruv Maharaj wanted to occupy an exalted position not by hook or by crook, but by honest means. This indicates that if Krishna offered him such a position, then he would accept it. This is the nature of a devotee. He may desire material gain, but he accepts it only if Krishna offers it.
Dhruv Maharaj was sorry to refuse the instruction of Narada Muni. Therefore, he requested him to be merciful to him by showing, showing path by which he could fulfill his mind desire. Anyway, I think we had a good discussion on the, devotee asking anything material from the Lord. Is it good, not good? How it should be? All that we have discussed, I think. So maybe that part will, will not do again. But here we can see how the good quality of Dhruv Maharaj was that actually, if you can derive parallel between Dhruv Maharaj and Dhritarashtra. Dhruv Maharaj wanted a kingdom greater than his great grandfather. Dhritarashtra also wanted such a kingdom. But you see, who wanted a greater kingdom? Dhruv Maharaj wanted a kingdom much greater than even what Dhritarashtra wanted. Dhritarashtra was wanting a kingdom of this earthly world only. Right? But Dhruv Maharaj wanted a kingdom greater than his great grandfather also. So that way, if you see in terms of the aspiration, material aspiration of Dhritarashtra is in no comparison to the material aspiration of Dhruv Maharaj. Dhruv Maharaj has such a bigger aspiration, right? And so, and we can see that how Dhruv Maharaj was afflicted because of the mother Suruchi's words, and then he was wanting to have kingdom greater than. So like that happened. So this incident happened. And then Dhritarashtra's case also, you find that he was also having attachment to his own sons. Yeah. So attachment or, basically he was influenced by his attachment, his own attachment. And he wanted greater kingdom. He wanted the kingdom because of his attachment. So here also you find that how Dhruv Maharaj, he was also afflicted. So yeah, there is also some kind of attachment involved. That's why he was afflicted by the insulting words of Suruchi. So, but what good thing happened with Dhruv Maharaj is that he took shelter of Lord Vishnu. That is something very, very wonderful. So coming Vishnu in our life or Krishna in our life is something very auspicious. Even sometimes it may be of some, not like a pure devotional platform. Sometimes, it may not be the case. But the power of coming to Vishnu is that by the touch of Lord, one actually eventually becomes purified. That is the wonderful thing. Like if you see even Maharaj Vena, there's a story in Bhagavatam comes about Vena. The Vena was a very audacious king. He was doing all sorts of notorious activities. He would even kill actually when he was a small boy, as a boy, he would play with his friends and he'd kill his friends literally. This was Vena. So, and his father's name was Anga Maharaj. Anga Maharaj, he was so frustrated and he was not able to understand how to train this child. So he was not able to do anything. So then what happened? Anga Maharaj, suddenly he left his kingdom because he understood there's no point in trying to set this fellow right. He is completely, notorious and everything. So he tried his best. He tried all means and ways, but somehow he could not make him proper. So then at last, he is telling me to speak in Hindi. Hindi में बोलूं क्या? Okay. Yes, Prabhuji. आप तो बोलोगे यस. आपने बोला ना रिक्वेस्ट. Okay. So, okay, try to understand English, no? In between, I'll try to speak Hindi. अच्छा, सबको हिंदी में चाहिए. Okay. तो आप देखेंगे कि कैसे अवर वेना जो थे वेना महाराज, तो उन्होंने तो पूरा actually he did not become Maharaj first. He was, when his childhood, he was happening like this, and eventually his father left. So जंग महाराज तो जंगल चलेगा, क्योंकि वो समझ गया कि अरे ये तो बहुत ही खतरनाक बेटा. बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं सुधर रहा था वो, तो जंगल चलेगा वो. तो बाद में फिर कोई राजा था ही नहीं, तो पूरा राजगद्दी खाली था, तो अंग महाराज को ही फिर किंग बना दिया. So they appointed him as king, and because there was nobody, so he actually naturally he became king.
तो हुआ क्या कि जो सारे चोर चक्के थे, ऑल द थीव्स एंड एवरीवन, तो वो सब के सब they actually they actually had to stop their all the mischievous activities. सारे उनके जो चोर डकैती के कार्य थे वो बंद हो गए उनके। क्यों? क्योंकि ये बड़े चोर डकैत जो राजा बन गए, इसलिए कि ये राजा बन गया तो बाकी सब चोर डकैत डर के मारे फिर का सारा कार्यकलाप बंद हो गया। तो एक तरह से एक फायदा हुआ कि ये बाकी चोर डकैत जो है वो डर के मारे अपना कार्यकलाप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये वीर महाराज खुद ही चोर डकैत थे। ये खुद ही लोगों को लूट लेते थे, खुद ही परेशान करते थे जनता को। वो बहुत खतरनाक थे। तो ये वेन जो है ना, वेन महाराज, ही वाज एक्चुअली नॉट एट ऑल ग्लोरिफाइड, यू नो, एंड वी डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ salvation or anything in something written in that about Veena Maharaj. Even though he was also very antagonistic, atheistic personality. But at the same time, we see Hiranyakashipu. लेकिन हिरण्यकशिपु की देखते हैं हम बात, हिरण्यकशिपु तो वो भी antagonistic थे, atheistic थे, लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन कंस का या हिरण्यकशिपु का, स्पेशली कंस अभी हम देखते हैं, कंस का एब्जॉर्प्शन कृष्ण में था, लेकिन तो कृष्ण के बारे में चिंता है, कृष्ण आ गए, कृष्ण को मारना है, तो कृष्ण 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 से संबंध था कुछ, तो उस कारण से बाद में उनका शुद्धिकरण हो जाता है। शुद्धिकरण सेंस कि उस कारण से फिर, क्योंकि कंस कृष्ण में इतना अब्जॉर्ब थे, तो उस कारण से जो राक्षस कम जैसे राक्षस भी, उनका भी मुक्ति हो जाता है भगवान, क्योंकि भगवान का स्मरण कैसे तो हो जाता है ना। तो श्लोक भी है ना कि जैसे गोपियों ने जो है भगवान को प्राप्त किया नो, भगवान से आकर्षित होकर के, तो उससे भी वो परफेक्शन प्राप्त कर लिया। कोई भगवान को द्वेष कर रहा है, जैसे यहाँ पे हिरण्यकशिपु है, तो वो द्वेष कर रहे हैं, तो वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग इस तरह से भगवान को प्राप्त करते हैं। नहीं, आपने शिशुपाल का भी देखते हैं, वो भी बहुत द्वेष करते हैं भगवान से। और फिर भय भय भी से, भयात कामात क्रोधात, सॉरी, द्वेषात भयात द्वेषात, ऐसे करके श्लोक में देखता हूँ, इधर रहेगा भया द्वेषात। It comes in seventh canto. Yeah, no. You're going? Oh, really? Yeah. Where is your application? Um, Application letter what type of movie? for leave? Oh, for leave. Yeah. Oh, I will come back next time. Oh, but you have to have like application I letter, know. and it has to be signed, Yeah. recommended by Ramchandra, then signed by me, and then Vanmari Pandit. Then only you can leave. Oh no, You cannot get leave like that. I know. We have a standard procedure. What can I do? I'm not sure. But don't leave us. We need you. Oh, thank you, Prabhuji. Please never leave us. Yeah, I will not leave, Prabhuji. Thank you. That was very nice fun Yeah. this morning. He's very powerful. Yeah, very nice. Yeah. I thank you so much for the evening book reading. Mm. That was really nice. You like it? Yeah, I love it. I waited a long time. Sorry, I get in DT services, so I get late sometimes. Oh no, I didn't like Oh, it's in the daytime. for many months. Oh, you are waiting to I've have. been trying to do book reading. Mhm. Yeah, that's what I meant by I was. We'll continue this. Yeah, because it motivates me, and it's really nice. Good. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Prabhu. So, well, madam, are you okay? Kamad, Vishad, Bhayat, Snehat. Whether, okay, let's see if I get more. Yeah, this one. See what it says. Many persons have attained liberation simply by thinking of Krishna with great attention and giving up sinful activities. This great attention may be due to lusty desires, inimical feelings, fear, affection, or devotional service.
I shall now explain how one receives Krishna's mercy simply by concentrating one's mind upon him. So this is a very important principle, focusing on Krishna. So he's telling, lusty desires, inimical feelings. Inimical feelings means, you understand, no? It's like our Hiranyakashipu kind of personalities, or even comes also Dveshat, no? Fear, out of fear. Out of fear also somebody takes shelter. Affection. Affection is, a positive one. Affection or devotional service. That is, devotees will have that. Because they're concentrating their mind on Krishna, they get purified. You can hear here. As they didn't know that. If a bona fide listener hears of Krishna's pastime with the gopis, which seems to be lusty affairs, the lusty desires in his heart, which constitute the heart disease of the conditioned soul, will be vanquished. Of course, this should be done under guidance, not whimsically. ऐसा नहीं कि Satan can't उठा करके पढ़ने लगा. It's not like that. Under guidance, a devotee should hear that he can pass sense to the Lord, then he'll be purified. And he'll become a most exalted devotee there are. Even who hears of gopis' lusty behavior with Krishna becomes free from lusty desires. Certainly, the gopis who approach Krishna become free from all such desires. Similarly, Shishupal and others who are very much envious of Krishna, who constantly thought of Krishna, became free from it. And Maharaj and Madhusudha were fully absorbed in Krishna because of affection. And the mind is somehow the other fully absorbed. Mana Krishna niveshayati. That's a principle. The material part is very soon vanquished. And the spiritual part, attraction to Krishna becomes manifest. So this phenomena is like this. So somebody is attracted to Krishna, somehow Krishna comes in his life, the mind is focused on Krishna, then the purification happens, and other things, whatever the material components, that will go away gradually. That will, जो भौतिक चीजें हैं वो निकल जाएंगी, और जो कृष्णा का प्रति आकर्षण है और devotional service, that aspect will be awakened. तो ये होता है. So spiritual components will increase and material components will get eradicated by focusing on Krishna. But suppose somebody doesn't focus on Krishna, then nothing will happen. Then that fellow will be doomed. So this indirectly confirms that if one thinks of Krishna enviously, simply because of thinking of Krishna, he becomes free from all sinful actions. Just think about it. Even somebody enviously also thinks about Krishna, he also is purified. What to speak of somebody is performing devotional service favorably. कोई प्रतिकूल भाव से भी अगर भगवान को स्मरण कर लेता है, उसको भी प्यूरिफिकेशन होता है. जैसे शिशुपाल का हो गया मुक्ति, या कंस का मुक्ति हुआ. तो कोई अगर अनुकूल भाव से भक्ति करेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो उसका क्या कहना, वो तो जरूर ही फिर शुद्ध होगा फिर. तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया है. गोप्यात कामात भयात कमसो द्वेषात चैदात दो नृपः संबंधात वृष्णय स्नेहात. जो वृष्णय अपने भगवान के जो यादव जो उनके एसोसिएट्स थे, तो उनका भगवान के साथ संबंध था, तो का स्नेह था उनके साथ, तो उस कारण से भी वो. इसलिए देखो, आप कभी कोई भक्त के जो संबंधी गण होते हैं, तो वो अगर भक्त के प्रति आसक्त होते हैं, भले वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन भक्त से आसक्त हैं, तो उससे उनको भी फायदा हो जाता है, क्योंकि भक्त का चिंतन कर रहे हैं. तो भक्त का चिंतन, भगवान का चिंतन एक प्रकार से अभिन्न है, एक प्रकार से देखा जाए, क्योंकि भक्त के चिंतन से भगवान का चिंतन क्यों, क्योंकि भक्त भगवान के ही चीजों में लगे हुए हैं. जैसे आपको भक्त कोई परिवार वाले देखेंगे, तिलक देखेंगे, कंठीमाला देखेंगे, हरे कृष्णा बोलता रहता है वो, तो कहीं ना कहीं वो कृष्ण का टच आ जाता है भक्त के कारण, क्योंकि भक्त कृष्ण के समान, कृष्ण के संबंध साथ में है, सानिध्य में. तो भक्त के संपर्क होने के कारण they are in touch with devotees that way. I mean, they are in touch with Krishna. Just a minute. Yeah. So it's saying, when Maya is some other fully absorbed in Krishna. तो वेना के केस में there was no Krishna at all. कृष्ण थे ही नहीं बिल्कुल, तो इसलिए उनका कुछ हुआ नहीं. लेकिन आप देखोगे कि शिशुपाल के केस में he was always Krishna conscious. अनफेवरेबल, प्रतिकूल भाव से, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस है. इसलिए हमारे जीवन में भी एज अ साधक वी शुड सी हाउ मच वी आर हैविंग, कितना हमारे जीवन में हम कृष्ण के प्रति हमारा फोकस है, कितना हम विग्रहों का दर्शन कर रहे हैं मंदिर आके, कितना हम भगवान का नाम जप करते हुए भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कितना हम प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ के भगवान का स्मरण बढ़ा रहे हैं. तो ये हमारा पाइवेट होना चाहिए, जीवन का सबसे मेन भाग होना चाहिए. तो श्रवणम कीर्तनम इसलिए बोलते हैं, हमारा जो पूरा आंदोलन है वो श्रवण और कीर्तन पर बेस्ड है.
The whole spiritual foundation of our movement is based on Shravanam and Kirtanam, because that leads to Smaranam, remembering the Lord or focusing on the Lord. That focus on the Lord comes, absorption in the Lord will come. आपका श्रवण और कीर्तन अच्छा है तो अपने आप फिर अपना जो माइंड है वो फोकस हो जाएगा भगवान पर, स्मरण होगा भगवान का। तो अगर श्रवण कीर्तन अच्छा नहीं है तो फिर भगवान का स्मरण नहीं होता अपना अच्छा। तो हम लोग पढ़ रहे थे 4 पॉइंट, क्या था ग्रुप? 4.8 पॉइंट 37। तो हम कह रहे थे धृतराष्ट्र और ध्रुव महाराज में। तो ध्रुव महाराज बिकॉज he took shelter of Narad Muni, previous his mother and Narad Muni, and then Lord Vishnu. That's how he got purified fully. But Dhritarashtra, he couldn't have that. He did not take shelter. He was only affected by the bad association. He did not take any shelter of any Vaishnava or any or the Lord also. He did not do that. Of course, at the end, when the Vidura forcefully gave his association to him and gave powerful preaching, then he could get. But still, he did not he did not get the highest. That's what is written there. He got something. Couldn't be Narottam. Something like that is mentioned there. No, because. Yeah, I mean, it was a little Bhatotpadita. Budra forcefully gave him instruction and he took it up. Surely he got benefited, he got elevated, but not like how a pure devotee or somebody who is focused on Krishna gets. So, but still, the principle is very clear that the coming in touch with the Lord is the most important thing. So here you can see that the very good thing about Dhruva Maharaj was that he got the Narad Muni and the Lord devotional services process. That is the most important thing. Yeah. Otherwise, without that, it simply becomes useless. Yeah. So I was telling that even Kashyapa Muni case also, Kashyapa Muni Aditi, there also Kashyapa Muni gave the Punsavrata to Aditi, and that's how she also got purified. She wanted to take revenge against Indra. She wanted to kill Indra, but because of engagement in devotional service, she got purified eventually. So this is what happens. So that's why devotee, the mature devotee, he always sees how people can be engaged in devotional service. That is the most thing. Because some people are not ready to hear. They want to just, want their own things. Like somebody wants to only, come to temple because he wants, to improve his concentration and get good marks and all that. So we don't deny them. We say, come, because chanting will help you to develop focus and all that. And we don't say it is not wrong also. But it is not about just increasing the focus. We should also tell that, but ultimate benefit of chanting is Krishna Prema. So one should aspire for it. So that way he'll get to hear all this thing also. So, and he'll also be engaged in devotional service. So that also will purify him. So we have to very carefully deal. So we don't compromise with the Shuddha Bhakti principles in our preaching. We do tell. At the same time, we also accommodate people, encourage them. Okay, you go ahead. No problem. These things also, it will be helpful. But ultimately, these are the side benefits. The ultimate thing is the bhakti. That's why we tell them also. So in that way, we can encourage. But the good thing, important thing is that help people to engage in devotion. And eventually, we should give them, we should see that how they're elevated to the purer aspirations also. Though we tell them in the beginning also, but they're more focused upon the side benefits. But eventually, we should try to help them to bring to the highest platform also. And that will happen. That's the nature of devotional service. Nunam bhavan bhagavato yogaraj parameshchinaha vitudan natat vevidam hitaya jagator kavat. Somebody can read? Translation. My dear Lord, you are worthy son of Oh, Lord. I want all of you to keep video also on. आप सभी लोग आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं। देखिए अभय प्रो कितना अच्छा वीडियो ऑन करके रखे हैं। हमारे साइदी प्रो का वीडियो अच्छा सा ऑन है। सब लोग वीडियो ऑन करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वो तो युवा गुरुकुल अच्छा तुमेश वो आप सभी लोग से विनती करते हैं, पार्थ प्रभु, सजित प्रभु, सभी
आप सब लोग वीडियो ऑन करके रखेंगे तो अच्छा है. मनीष प्रभु, और प्लीज कीप वीडियो ऑन. Yes, Prabhu. Read. My dear Lord, you are a worthy son of Lord Brahmana, and you travel, playing on Brahma, your not Brahmana, Brahma. Brahma, and you travel, playing on your musical instrument, the veena, for the welfare of entire universe. You are like the sun, which rotates in the universe for the benefit of all living beings. Hmm. Very nice example. Yeah. So pure the devotees of the Lord, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको सूर्य से तुलना की गई है. क्योंकि सूर्य क्या है, वो जाता है और सबको प्रकाशित करता रहता है. तो वैसे ही जो साधु होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भी दे ऑल्सो ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. एंड क्या होता है, दे ऑल्सो रिमूव द डार्कनेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड. तो दिस एनालॉजी इज वेरी फिटिंग. एक्चुअली पृथु महाराज भी बोलते हैं, पृथु महाराज के दरबार में जब ये आते हैं, पूर्व कुमार आते हैं, तो उसमें उसमें भी उनको ऐसा शायद वहां पे वैसे तुलना हुआ है. और नारद मुनि का एक जगह और ऐसा तुलना हुआ है. उधर भी ये बोलते हैं, आई थिंक शायद प्राचीन महर्षि वो लोग बोलते हैं शायद से. हाँ, करेक्ट, वहां पे बोलते हैं, प्रचेता प्रचेता बोलते हैं, शायद प्रचेता भी बोलते हैं वैसे. प्रचेता नहीं, प्राचीन बरही बोलते हैं शायद. बट समवेयर नो, बट डिफरेंट प्लेसेस यू फाइंड दैट कि नारद मुनि या the like the spirit devotees, those who travel around, they are compared to sun. Yeah, a selection which rotates in the universe for the benefit of all living beings. Purport: through Maharaj, although a child, read. Dhruv Maharaj, although a young child, expressed his hope that he might be offered the benediction of kingdom which could exceed in opulence those of his father and grandfather. He also expressed his gladness that he had met such an exalted person as Narada, who whose Hmm. only concern was to illuminate the world, like the sun, which rotates all over the universe only for the purpose of benefiting the inhabitants of all planets. Hmm. Correct. Read. Narada Muni travels all over the universe for the sole purpose of performing the best welfare activity for the entire universe by teaching everyone how to become a devotee of the Supreme Personality of Godhead. Thus, Dhruv Maharaja felt fully assured that Narada Muni could fulfill his desire, even though the desire was very extraordinary. The example of the sun is very significant. The sun is so kind that he distributes his sunshine everywhere without consideration. Dhruva Maharaj requested Narada Muni to be merciful to him. He pointed out the Narada travels all over the universe just for the purpose of doing good to all conditioned souls. He requested that Narada Muni show his mercy by awarding him the benefit of his particular desire. Dhruva Maharaj was strongly determined to fulfill his desire, and it was for the purpose that he had left his home and place. Yeah. So you can see here, Dhruv Maharaj is glorifying Narad Muni as, the sun. The Prabhupada also is telling that how this is very significant, because the devotee of the Lord, he will travel just to do good to the conditioned souls. So we also should identify ourselves as agents of Prabhupada, agents of Krishna. So when we go out, we have to know that we are agents of Krishna, we are agents of Prabhupada. So through us, only good should happen, that people get benefited. That should be our thought process. So then next question will come: how you can do good to others? What we can do? Let's say go out. How we do good to others? So can you tell some things? How can you do good to others? You being the representative of Lord or Srila Prabhupada or Parampara, because you are representing, right, when you're going out. So how can you do good to others? Somebody can tell what all things you can do. If you're going for a job, or you're going from your voice to, say, your
company, whatever, wherever. तो आप अपने वॉइस अगर घर ऑफिस आ रहे हैं तो भी बस में रहेंगे या बस बस के लिए वेट करते रहेंगे या कंपनी में रहेंगे, तो कैसे आप दूसरों के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है? समबडी कैन टेल, बताइए। हाँ We can distribute books, bro. हाँ, वन थिंग कैन हैपन, हम पुस्तक रख सकते हैं। तो कभी बाहर जा रहे हैं, कुछ पुस्तक रख सकते हैं साथ। तो आप में से कुछ लोग जो मेरे साथ कभी ट्रेवल किए होंगे, चाहे धीरज प्रभु, शायद प्रभु, प्रथमेश प्रभु, हम लोग को एक्सपीरियंस है। प्रथमेश प्रभु, वी हैव डन लाइक दैट, हम लोग पुस्तक रखे Yes, कभी, bro. Yes. या तो वी सी दैट नो, ऐसा नहीं है कि हम नो सोचें कि अरे कौन लेगा प्रभु, नो हु विल टेक, नो इट विल बी अननेसेसरी वी जस्ट कैरिंग लाइक दैट, कहाँ मेरे को टाइम है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आप पूछो जो भी ऐसा कभी ट्रेवल करते हैं, अगर आपने पुस्तक रखा है, इफ यू हैव केप्ट द बुक्स इन योर बैग, देयर ऑलवेज बी पीपल हुड बी इंटरेस्टेड। आप अगर वहां जहाँ बैठे वहीं पे दिखा दोगे, लोग ले लेंगे। डू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट प्रथमेश प्रभु? प्रभु मैंने लिया था बुक आपसे ऑन पुणे रेलवे स्टेशन। हाँ, स्टेशन पे प्रभु जी ने लिया था, ओके ओके, करेक्ट। आई थिंक धीरज प्रभु थे ना वहाँ पे उस टाइम पे, धीरज प्रभु। यस यस धीरज Yes, प्रभु थे। मायापुर जा रहे थे, हम मायापुर जा रहे थे, bro. हाँ, हम मायापुर जा रहे थे तो गणेश प्रभु ने, और गणेश प्रभु ने बुक लिया और एक साल के बाद कॉल किया कि प्रभु आपने मेरे को पुस्तक दिया था एक साल पहले, तो मैं जोड़ना चाहता हूँ। करेक्ट गणेश प्रभु? राइट। या हाउ मेनी राउंड्स यू आर चैंटिंग नाउ? आई एम नॉट चैंटिंग राइट। अच्छा, you can chant one round, maybe that will be good. If one round you can chant, it will be good. ओके प्रभु, अभी मॉर्निंग को सोच रहा था कि स्टार्ट करता हूँ। Hmm. Okay, ठीक है प्रभु, no issues. But you try to chant one round. That will be good. यस प्रभु। You have received the book. Now you have to receive the holy name also. राइट Because प्रभु। book will give you holy name. Yeah, and that's the purpose of Prabhupada books. The purpose of Prabhupada books is that it convinces you to take up the process of devotional service, primarily chanting the holy name of the Lord. Yes, then the purpose of giving you book is fulfilled. अगर आपने पुस्तक को सच में रिसीव किया है, तो that means you will come to the action. वो क्या है? Then you will start chanting. आप round chanting. You will start chanting Hare Krishna यस Mahamantra. At प्रभु। least one round. At least एक माला you यस can प्रभु। try every day. यस Okay, प्रभु। प्रथमेश को आपको कोई एक्सपीरियंस है? You have any experience? कि लोग ऐसे आसानी से ले लेते हैं पुस्तक, कुछ एक्सपीरियंस है आपको? प्रथमेश को है कि नहीं है? प्रथमेश वो नहीं है शायद, नॉट देयर। ओके, तो धीरज ब्रो, आपको एक्सपीरियंस है कि पीपल जस्ट टेक इट, यू डिड नॉट एक्सपेक्ट बट पीपल टेक इट, यू जस्ट बिकॉज यू हैड बुक्स? Yes, वो वही मायापुर जा रहे थे हम, तो एक पूरा बैग था बुक का, तो हमने सिर्फ ओपन कर लिया था, तो सभी लोग आ गए थे, मतलब वहाँ पे। है ना? Yes, And yes. Dheeraj was thinking why this fellow is carrying so many books. Correct? Yes, yes, bro. Really, you are thinking really like that? Yes, वो पूरा एक सूटकेस था ना बुक का, तो मैं बोला ये कैसे होगा करके, I was thinking about that. Yeah, just because he was a little younger to me, so he was not opening his mouth. But actually he was concerned. Okay, yeah, but yeah, that's true. So when you open the book, I mean, when we, I also remember, we just opened the suitcase and many people started coming and they started taking the books. No, हमको भी दे दो, like that. I think one or two fellows just took the book, couldn't give money also. Then I told him, take the number at least. And I think they paid later, correct? They paid later online. Yes, bro. Yeah. So yeah, this happened. And somebody came to drop us in our bogie also, you remember? Yes, so he was military person, someone. Yeah. I don't know. Now I don't remember his number also. I don't know whether I have his number or not. But this happens like that. Correct. That's true. Correct. So you can see that whenever we have books with us, then easily people will come and take.
But if you keep thinking how, oh, nobody will take book and this and that, how can I explain? What can I explain? No, you don't have to do anything. You have to only show the book. Once it happens, once there was one person, he was carrying the books in the bag, no, just carrying. He was going to the office, and their office, while going to the gate, there was one Mataji who had to check the bag. So she checked the bag, she got a book. So what is this? And he said, it's a spiritual book. You like to take? So, yes. And can I take this book? She asked. Okay. And then she gave money and over. So just carrying the book only, that the person who wanted the book, take it, the Krishna arranged like that. So she took it, even without any effort. So this Prabhu did not do any effort. He just carried the book in his bag. That's all. So if you simply carry the books, the Prabhupada books in your bag with you, that itself is the biggest step in your trying to help the conditioned souls to take Krishna consciousness. You're benefiting them by that. तो ये बहुत पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी ट्रैवल करिए, कुछ पुस्तक रखिए साथ में। और ये कब रखेंगे? जब चेतना ऐसी होगी कि वी शुड बी लाइक सन, वी आर एजेंट्स ऑफ प्रभुपाद, वी आर एजेंट्स ऑफ कृष्ण। तो हमारा एक आइडेंटिटी होना चाहिए। हमारा प्राइम आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज योर प्राइम आइडेंटिटी? इफ आई आस्क यू, धीरज प्रभु और प्रथमेश प्रभु और एनीवन, व्हाट इज योर प्राइम आइडेंटिटी? हमारी वास्तविक पहचान क्या है? नहीं पता। We are part and parcel of Lord Krishna. That is all right. We are servants of Srila Prabhupada. We are servants of our spiritual master. Yes, we are servants of Lord Chaitanya. So what we should do? We should try to act on their behalf. Correct? We may be in whatever role. You may be in the role of officer. Somebody may be in the role of a teacher. Somebody may be in the role of a student. They may have different roles in this world. But through all these roles, we have to do something good in a Krishna conscious way. I mean, some Krishna consciousness impact should be there in all our interactions. So one direct way of Krishna conscious impact is through books. Like some devotees, what they do, they would just put some books on the desk. Anybody comes and goes and sees, oh, this is a book. And if they themselves ask, so they may say, okay, I can take it. So that book would happen, just keeping the book on the desk. Anybody can keep his personal books on the desk. Now, what is wrong in it? There's nothing wrong. Nobody can object. You can keep some books on your desk where you're working. People will come and ask, oh, what is this book about? And you may tell, and they may want to, can I have this book? Yeah, you can have. You can give some donation. They may give some donation or something. Do that. So that way the book distribution will happen. So it's very simple. What else can be done, Prabhu? Books is one thing. What else? पुस्तक एक चीज हो गया, और क्या कर सकते हैं? If we are comfortable, we can chant Hare Naam Sankirtan कर सकते हैं. Yeah, not comfortable. We have to be comfortable all the time to chant Hare Krishna mantra. That is the most comfortable situation. Yes, we should do Hare Naam Sankirtan. We can chant. Anyone of you have experience कि you are not doing any Sankirtan, anything, तो ऐसे सब डल पड़ा हुआ था, लेकिन आप संकीर्तन करना चालू किया तो सब लोग इन्वॉल्व हो गए, सब लोग अच्छे से जप कीर्तन कर रहे थे? किसी का एक्सपीरियंस है ऐसा ट्रैवलिंग करते हुए? किसी का एक्सपीरियंस है? You are Yogi Nataraj Prabhu? Yes. Oh, Hare Krishna. From? I live in Las Vegas. I heard about you. I saw your poster also. This connect with me. I don't know, Prabhu. I'm not aware. This TV is then. Okay. Yes, Prabhu. Anyone of you have experience of that? No experience. किसका experience नहीं है? अरे रही में पार्थ प्रभु, अभय प्रभु, सब क्या? हाँ, कुछ experience नहीं है? हाँ, पुणे स्टेशन में प्रभु जब जा रहे थे तब है ना? पुणे स्टेशन में क्या जा रहे थे तो हमने देखा था। क्या हुआ था? मतलब उन्होंने कीर्तन स्टार्ट किया था और सब ज्वाइन कर रहे थे वहां पे। हम देख रहे थे कि My name is मतलब Raghav Kripadas. What you are going to teach, Prabhu? Today? No. Today? Yeah. Today I'll do 2 sessions. One is on Ayurveda.
don't know that. Okay. The guy requests my writing. So I can't do that. So I'll make the presentation. How do you imply in their daily life? Mudras for health. Well, so yeah. Oh. Oh. But it actually feels like presentation. Oh. You have some article on, I mean, some kind of document. Books. No, but some kind of short books like that. I have a lot of videos. Some short, like in short, we can understand some things, get some. Yeah, I'll share. Like with presentation, I have drawn some, but Well, I have to say, I'm not writing. yeah. No, but at the end I will show. Okay, yeah, sure. Thank Right you. now I'm. No, sure. Yes, bro. Okay, fine. We'll go ahead. मैत्रेय उवाच इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः पत्याः तं बालं तदवाक्यम् अनुकम्पया. Then he said, the sage Maitreya continued, the great personality Narada Muni, upon hearing the words of Dhruv Maharaj, became very compassionate toward him, and in order to show him his father's mercy, he gave him the following expert advice. So the great sage Narada is the foremost which a master. Naturally, his only activity is to bestow the greatest benefit upon whoever he meets. Dhruv Maharaj, however, was a child, and so his demand was also that of playful child. Still, the great sage became compassionate toward him, and for his welfare, he spoke the following verses. Yeah. This compassion is a constant phenomena of a great soul. दया, जो भक्त होते हैं उनके हृदय में दया होती है. हमेशा सोचते हैं कि कैसे ये जीवात्मा जो है भगवान के नजदीक आ जाए. उनके लिए हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए इसके साथ ताकि भगवान से नजदीक आ जाए. प्रीचर का यही जॉब होता है. प्रीचर मतलब हमेशा सोचे कैसे ये जो डिवोटी है वो, कैसे ये जो व्यक्ति है ये भगवान की भक्ति में लग जाए. यही उनका चिंतन होता है. तो उसके लिए वो सोचते रहते हैं क्या उसको क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाहिए, क्या जरूरत है, तो कैसे इसको हम जोड़ सकते हैं कृष्ण के साथ. किसी का आरएसएस में इंटरेस्ट है समझो, उसको बताओ कि कैसे भारत का रियल ग्लोरी क्या है. भारत का रियल ग्लोरी है आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम, दैट इज द रियल ट्रेजर. तो उसका प्रोपोगेशन कितना इंपॉर्टेंट है देखिए. तो वो कृष्ण प्रेम, वो देश प्रेम से कृष्ण प्रेम में आ सकते हैं, पॉसिबल है. किसी को समझो आर्मी में जाना है, आर्मी wants to become an army. जैसे चैतन्य महापुरुष आर्मी, that is going to, जैसे प्रभुपाद जी किसमें थे, वो he was in freedom fighting. तो प्रभुपाद जी देश प्रेम. लेकिन जब भक्ति ने कहा कि कृष्णा कॉन्शियस इमरजेंसी, तो and how Krishna conscious cannot wait for anything, then he came from desh prem to Krishna prem. Of course he had Krishna prem, but in that लीला, जो लीला में वो उस समय वो फ्रीडम फाइटिंग में लगा, प्रभुपाद तुरंत समझ गए और फिर वो भक्ति के पाथ पे पूर्ण रूप से आ गए. तो हम ये देखते हैं कैसे बाय एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सोल्स one can actually be elevated. So you can also try to help people to connect to devotional service, and they eventually they'll be elevated to further understanding of their life. In the beginning they may be stuck at different levels like that. और आपने देखा होगा ऐसे कई लोग खुल जाते हैं, उनको जब आप प्योर कृष्णा कॉन्शियस मैसेज देते हो तो पकड़ लेते हैं उसको, तो समझ जाते हैं. फिर वो बाकी जो चीज़ों में लगे रहते हैं उसको फिर करके वो समझ जाते हैं कृष्णा कॉन्शियस जो टॉप मोस्ट है, समझ जाते हैं उस चीज़ को, तो कृष्ण के पास आ जाते हैं. तो लोग अलग अलग, कोई परिवार धर्म में लगा है, कोई देश धर्म में लगा है, ऐसे अलग अलग प्रकार में लगा. लेकिन जो कृष्ण महाराज को समझते हैं ठीक प्रकार से, वो समझ जाते हैं कि ये सबसे मूल्यवान चीज है. इस प्रकार तो ऐसे लेट अस गो फर्दर. नारद उवाच जनन्याभिहिता पंथा सवै निश्चयस्तस्ते भगवान वासुदेवस्तं भजतं प्रवणात्मना. The great said Narada told Dhruv Maharaj, the instruction given by your mother Suniti to follow the path of devotional service to Supreme Personality of Godhead is just suitable for you. You should therefore completely absorb yourself in the devotional service of the Lord. For Dhruv Maharaj's demand was to achieve an abode even greater than Lord Brahma's. Within this universe, Lord Brahma is supposed to be an exalted position, for he is the chief order. But Dhruv Maharaj wanted to run beyond this. Okay, we'll do one thing. Okay, I'll read this. When Krishna offers anything, it is beyond the expectation of the devotee.
But Suniti and Narada Muni knew that the demand of the Maharaj was impossible for any demigod to fulfill, and therefore both of them recommended following the process of devotional service to Lord Krishna. Narada Muni is referred to here as Bhagwan because he can bless any person just as the Supreme Personality of Godhead. He was very pleased with Dhruva Maharaj and he could have at once personally given whatever he wanted, but that is not the duty of the spiritual master. His duty to engage the disciple in proper devotional service as prescribed in Shastras. Krishna was similarly present before Arjuna, and even though he could have given him all facilities or victory over the opposing party without a fight, he did not do so. Instead, he asked Arjuna to fight. In the same way, Narada Muni asked Dhruva Maharaj to undergo devotional discipline in order to achieve the desired. So this is very important. So the spiritual master will not just directly give you, whatever you want. He will help you to get purified by giving the process of devotional service. That is the most important thing. And that way we develop our loving affection for the Lord. Actually, if Krishna would have given Arjuna directly the victory and everything, then how would have expressed his devotion and love to Krishna by fighting for Krishna? That is most important. That spiritual master gives the opportunity to a disciple to engage in service of the Lord, by which we can express our love for Krishna, love for him. अगर कभी हमें गुरु से या वैष्णव से सेवा मिलता है तो बहुत खुश हो जाना चाहिए। इसका तभी तो अपने सेवा को देकर के ही प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप सबको प्रेम व्यक्त करना है किसी के प्रति, तो कैसे व्यक्त करेंगे? तो सेवा करके, तो जिम्मेदारी लेकर। अगर हम कमिट करेंगे अपने आप को, सेवा देंगे, तो उसका मतलब हम प्रेम करते हैं। लेकिन हमारा प्रेम और कृतज्ञता फिर केवल खालीपन है फिर, अगर हम कुछ सेवा से उसको रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। तो जितना हम अपने प्रभुपाद जी के मिशन में सेवा देंगे, वो भाव से आएंगे कि हमको सेवा देना है क्योंकि हम प्रेम करते हैं प्रभुपाद जी को या प्रभुपाद जी के अनुयायियों को या हमारे वरिष्ठ भक्तों को, तो फिर हम उनको सेवा भी देना चाहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी टाइम अप हो गया है और मेरे पास भी ये इसमें बैटरी भी नहीं है अभी। एक क्वेश्चन है किसी का? किसी का एक प्रश्न? आप सब आपका वीडियो भी ऑन कर सकते हैं if पॉसिबल। किसी का प्रश्न है? एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? नहीं? कोई क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन, एनीथिंग? how many are chanting, how many rounds? हरे कृष्णा। यस प्रभु, बताइए। क्वेश्चन दैट कि इस्कॉन का बेसिक प्रिंसिपल प्रभु 4 चीजों पे है: नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये जब केवल श्रील ये इस्कॉन का नहीं, ये भागवतम में है, ये भागवतम में दिया गया है। ये 4 प्रकार के ये अधर्म के पिलर हैं। बोलिए। तो प्रभु कहते हैं कि जो भी मतलब प्योर डिवोटी होता है और जो भी मतलब आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसको ये 4 प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। तो जब से उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी श्रील प्रभुपाद जी ने, और जिनसे स्टार्ट की थी जो हिपीज थे, वो ये चारों चीजें एक पीक पे करते थे, मतलब सबसे ज्यादा वही करते थे उस टाइम पे वहां पे। तो वही लोगों से जिन्होंने जहां से उन्होंने स्टार्ट किया, वही लोग इतना ज्यादा करते थे और वही लोग चेंज हो गए। तो उसके बाद ही प्रिंसिपल सेट हुआ कि मतलब आपको ये नहीं करना है। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि जो वैष्णवा होगा वो ये चीजें नहीं करेगा तो ही वो प्योर होगा? क्योंकि वो लोग तो इतने डर्टी, मतलब ना उनका मेंटली वो इतने ठीक थे, ना फिजिकली वो इतने ठीक थे, उसके बाद भी वो लोग प्योर हो गए। तो आपका प्रश्न क्या है? तो प्रश्न प्रभु ये था कि प्रिंसिपल जरूरी है हमेशा फॉलो करना, क्योंकि वो लोगों ने तो प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं किया था पहले, किया उसके ना, बाद से वो लोग। you're not understanding. They followed the principle. Prabhupada told them not to follow this. Told them to follow these 4 principles and chant Hare Krishna. And when they were able to follow properly, then they were getting initiated. बिना प्रिंसिपल फॉलो किए, 16 माला जप किए, किसी को इनिशिएशन नहीं दिया, नहीं देते हैं। समझ में आया ना? फॉलो करने के लिए बोला ना। अरे तो उसके प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी तो शुद्ध होंगे। देखो 4 नियम पालन नहीं कर रहे थे पहले, उनको बोला स्टॉप इट। जो लोग ने स्टॉप किया और जो लोग जपा चालू किया, वो प्यूरिफाई हुए ना। अभी 4 नियम गड़बड़ में लगा ही हुआ है, तो फिर कैसे करेगा? फिर वो जपा कैसे करेगा? तो यहाँ के लोग तो प्रभु ये सब चीजें करते ही नहीं है, तो वो लोग डायरेक्टली मतलब एलिजिबल हो जाते हैं कौन नहीं करता इनिशिएशन है? के लिए।
जैसे हम कौन लोग नहीं करता? मतलब जो इंडिया साइड के लोग हैं, जो मतलब इंडिया से वो कल्चरली डेवलप हाँ, होते हैं। अगर आप 16 माला करते हो, हाँ, 1 साल या 3 साल, अलग अलग गुरुओं का अलग अलग तरह से रहता है, तो आप उसके 16 माला करते हो और आपका अंडरस्टैंडिंग फिलोसफी अच्छा, हम इंडिया में थोड़ा और स्टैंडर्ड देखते हैं ताकि अच्छे से वो लाइफ टाइम अच्छे से करे, दीक्षा लेने के बाद अच्छे से शिष्य रहे अच्छा। तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं? इसलिए भारत के लोगों को ज़्यादा आसान हो जाता है कई बार, ज़्यादा भक्त बन भी रहे हैं, जो वेस्ट में थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन यस वी हैव टू ट्राई, एनीबडी कैन डू दैट, सब टू द मैटर ऑफ द व्यक्ति के ऊपर है, चाहे तो व्यक्ति कर सकता है। विल हो जाएगा कब? जब वो तैयार है, 16 4 नियम पालन करता है, 16 माला करता है और उसका फिलोसफी सही है, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है, और कोई दीक्षा लेना चाहता है तो कोई गुरु से अप्रोच करके ले सकता है। उसका क्राइटेरिया है 1 साल 3 साल तक 16 माला कर रहा है वो, ऐसा कुछ देखते हैं वो लोग। पापा ने 1 साल का नहीं रखा होगा क्राइटेरिया, कम रखा होगा, इसलिए उस दीक्षा के समय तक होना चाहिए। अभी भारत में थोड़ा स्टैंडर्ड का बढ़ाया है क्योंकि कभी कभी लोग चीपली ले लेते हैं, लेकिन वो सब थोड़ा डिटेल है, लेकिन मेन प्रिंसिपल है कि 16 माला और 4 नियम का पालन होना चाहिए। बाकी और भी हम देख सकते हैं, लेकिन मतलब ये बेसिक है, ये बुनियादी है, ये तो बाकी होना ही में चाहिए। प्रभु, बाकी में और क्या क्या आएगा जैसे? और बाकी में वो तो अलग अलग गुरु का अलग कर सकते हैं, कोई गुरु कहते हैं कि नो यू शुड 10 25 rounds on Ekadashi, some guru may want you to different things, means okay 3 years at least, some guru may not give for 3 years also, sometimes 10 years 11 years 15 years also they wait, some gurus they may not be so inclined immediately to give initiation, तो अलग अलग गुरु अपने हिसाब से देख सकते हैं, दैट्स ऑल राइट, लेकिन बेसिक जो है वो 16 माला 4 नियम होना चाहिए। अभी आईडीसी कोर्स होता है, अभी आईडीसी में डिपेंड किया था, आईडीसी कोर्स होना चाहिए, वो बताया अभी जेबीसी ने निकाला है आईडीसी कोर्स को, ताकि सब क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे गुरु तत्व वगैरह सब के बारे में। तो ऐसे इस तरह से अलग अलग हो सकता है लेकिन बुनियादी क्या है? 4 नियम 16 माला, 4 नियम पालन करना, 16 माला वो होना ही चाहिए। देश के लोगों को फॉलो तो करना ही पड़ेगा था, बिना फॉलो किए वो कर रही है, प्यूरिफाई हो गए, दीक्षा हो गया और उसके बाद भी 4 नियम का पालन नहीं कर रहे, बाद में प्यूरिफाई हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। प्रोसेस में ये भी है, 4 नियम का पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। देखो कोई 4 नियम तुरंत नहीं बोलते हैं, पहले कहते हैं अब जपा करो, जपा चालू कर देता है, देन वी इनकरेज देम टू फॉलो द क्यूरेटिव प्रिंसिपल, क्योंकि देन देयर चैंटिंग विल बी मोर इफेक्टिव, उनको स्ट्रेंथ आएगा ना, सुनेंगे अच्छा 4 नियम पालन करना होता है तो स्ट्रेंथ से फिर कर सकते हैं, 4 नियम का पालन कर सकते हैं। तो जब 4 नियम पालन करना चालू कर देते हैं, फिर दीक्षा के लिए तैयार होते हैं। समझ में आया? First we introduce to chanting, प्रसादम, all that, then slowly they will get philosophy, then they understand 4 नियम का पालन करेंगे तब स्पिरिचुअल लाइफ में हम आगे बढ़ेंगे अच्छे से, फिर वो 4 नियम का पालन करना धीरे धीरे चालू करते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से होता है, ठीक है ना? एट द फर्स्ट मीटिंग वी मे नॉट टेल अबाउट फोर दैट मे नॉट बी, ओके? समझ आएगा? यस प्रभु। आप फिर से पूछ सकते हो, आपका कुछ क्वेश्चन और हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ लेना। We'll stop here. Huh? I have to go for service also. Hari Bol. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Nityananda ki jai. Jai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna. बात प्रभु सॉरी, आपको मैं आपने पूछा था कुछ, मैंने आपको कुछ बता नहीं पाया। आई वॉज क्या? ट्राइंग टू कॉल यू, आपको मैं कॉल कर रहा था कभी, लेकिन आप अवेलेबल ही नहीं थे, आपका फोन नहीं लगा। अरे प्रभु, नेट का थोड़ा इशू चल रहा था मेरा तो कुछ दिन से, मैंने नेट पैक जानबूझ के नहीं करवाया।